So, hello students. In previous video, I have discussed about the working and syntax and working of while loop and do while loop. Okay. Now, in this loop, I am going to discuss the syntax and working of for loop. Okay. So you can see on the screen, I have written the syntax of for loop. For, then initialization, condition, updation. Okay. So before explaining the working of for loop with an example, let me let me clear few words. कुछ words हैं जो हम पहले clear करना चाहते हैं. तो देखो, see here I have written a word initialization. Initialization का मतलब क्या होता है? Just let me confirm it. See, if you're writing int a, this is called variable declaration और this is called variable definition. यहाँ पे हम variable declare कर रहे हैं. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? Variable declare कर रहे हैं. और sometimes it is also called we are defining the variable. हम variable define कर रहे हैं. This is not initialization at all. ये कहीं से भी initialization नहीं है. This is called variable declaration और variable definition. Defining variable और declaring variable. ये initialization नहीं होता. जनरली बहुत से स्टूडेंट्स इसी को बोलते हैं कि वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया. दिस इज नॉट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन. ओके, सो जस्ट बी केयरफुल, दिस इज नॉट initialization, this is only variable declaration. Okay, consider here I am declaring a variable a. Okay, this is variable declaration, and afterwards if I am writing storing of initial value to this variable, initial का मतलब starting value, if I am storing initial value to this variable, any initial value as per the requirement, this is called initialization. यहाँ वेरिएबल a की वैल्यू हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं. इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट कर रहे हैं. तो किसी वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू स्टोर करना इनिशियलाइजेशन कहलाता है. ठीक, स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू किसी वेरिएबल में जो स्टोर करना होता है उसको हम क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन कहते हैं. दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड दिस इज initialization, storing initial value to the variable. Okay, so don't be confused. Declaration is different thing, initialization is different thing. So here I'm talking about initialization. So you can see here in the example I have declared as well as I have initialized also. Means that two statements can be written together. We can declare and at the same time we can initialize also. दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं. So don't be confused. Okay, so please keep in mind what is the meaning of declaration and what is the meaning of initialization. So I'm going to discuss. See, so here I have initialized the value of I with 1. Okay, the same process. Then after initializing, this control will go to this condition. As per the syntax, you can see this is the condition. And this condition is true. This condition is true. So if the condition is true, control will go inside the loop. And whatever statements we have written within the loop will be executed. Okay, this I++ will not be there. By mistake I have written, sorry. Okay, then condition is true, so control will go inside the loop. And the statements written within the loop will be executed. Here I have printed, only I have printed the value of I, so that will be printed. Output will be the value of I, that is 1, will be printed. Then from the closing of the loop, it will go back for the updation statement. See here I have written updation. Updation का मतलब I की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही है, sometimes increase होगी, कभी decrease होगी, as per the requirement. So from the closing of the loop, control will go back for this updation statement. Now the value of I will be updated with 1. Now it will be what? 2. Increase होगी, I की वैल्यू 1 से increase होगी, 2 हो जाएगी. उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी. If this condition is true, control फिर से loop में जाएगा. And the statements written within the loop will be executed. Here we are printing the value of I. So the value of I is 2. So 2 will be printed here. Then I++ will be what now? 3. Condition true. So I++ after printing 2, from here I++, the value of I will be 3. Condition true. फिर से control loop में जाएगा.
जो भी स्टेटमेंट लूप के अंदर लिखा हुआ है प्रिंट होगा, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर प्रिंटिंग 3 फिर से क्लोजिंग से कंट्रोल वापस आएगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू होगी 4, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल लूप में जाएगा, फिर से आई की वैल्यू प्रिंट होगी, या जो भी स्टेटमेंट लिखा है लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा, यहाँ 4 प्रिंट होगा, एंड सो ऑन लाइक दिस। आई की वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी और 10 होगी। आफ्टर प्रिंटिंग 10 प्रिंट करने के बाद कंट्रोल यहाँ से वापस आएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी, तो कंट्रोल लूप से बाहर आएगा। तो ये वर्किंग थी फॉर लूप की, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद ऐसे लूप चलेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, ट्रू तो लूप के अंदर जाएगा, फिर ऐसे, फिर अपडेशन होगा एंड ऐसे लूप चलता रहेगा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होगा, बाकी कंडीशन अपडेशन और लूप के अंदर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। ये ऐसे यहाँ से एक बार आया, उसके बाद कंट्रोल ऐसे और फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। आगे बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट सिंटैक्स एंड working of the for loop, and you can see here also in this loop also we are checking the condition at the beginning of the loop, so such loop, this loop is also entry controlled loop. Okay, so for this video this much only. In next video I will come with concepts, few basic concepts of loop, कुछ बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लूप के जो जानना जरूरी होता है। जनरली वो बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग इग्नोर करते हो, तो उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आती हैं, आउटपुट वाले क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। सो बेटर कि यू मस्ट नो दैट कॉन्सेप्ट। सो आई विल कम विथ न्यू वीडियो, in that video I will discuss basic concepts of loop. Okay, so for this video this much only. Thank you students.